Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to present a presentation on journal club, and the article is correlation between changes in intraocular pressure and refractive error indices post cataract surgery. This article was published in Pakistan Journal of Medical Sciences in edition March-April 2020. This study was conducted in Multan Medical and Dental College and Bodla Eye Care. Objective of this study is to evaluate the correlation between refractive errors and change in intraocular pressure in patients undergoing cataract surgery. So cataract causes 39% of the blindness and 33% of severe visual impairment across the country. Cataract surgery is manifested to be beneficial in improving visual impairments by removing the opacified lens as well as decreasing the intraocular pressure in patients with or without glaucoma. The reduction in the intraocular pressure is proportional to the preoperative intraocular pressure. The greater the preoperative intraocular pressure, the greater is the reduction after cataract surgery. In patients who have narrow angle, IOP lowering is proportional to the degree of deepening of the anterior chamber after phacoemulsification. Rationale of the study is to determine whether there is any significant lowering of IOP post-cataract surgery in patients with refractive errors and to determine whether there is a specific contribution of a refractive error more to this phenomenon. Methods. The study design of this study is interventional retrospective study. The duration is of 8 months. This study was started in September 2018 till April 2019 in Multan Medical and Dental College and Bodla Eye Care. The sample size was calculated to be 121. The inclusion criteria included patients presenting in the outpatient department with cataract who were 20 years or above in age and who were willing to understand and sign the consent form. Patients who were willing to attend post-op follow-ups as per schedule. Patients with glaucoma, age-related macular degeneration and other ophthalmic diseases were excluded from the study. Patients with ocular hypertension and other systemic diseases were also excluded. And patients who underwent extracapsular cataract extraction for cataract removal were also excluded. Only those patients who underwent phacoemulsification for cataract extraction were included. Data was collected after taking informed written consent. All 121 surgeries were performed by the same surgeon and same intraocular lens was implanted. There were 5 visits, 1 pre-operative visit and 4 follow-up visits at post-op day 1, day 7, day 14 and post-op day 28. In all these visits, IOP was measured using Goldmann applanation taurometer and the pre-op refractive error was calculated through autorefractometer. So refractive error of 0 to minus 0.25 diopter was considered emetropia, minus 0.5 diopter to minus 5.75 diopter was considered mild to moderate myopia, and minus 6 diopter and above was considered high myopia. Data was analyzed using SPSS variant 20 and it was evaluated using descriptive statistics. Relation with variable was calculated using chi-square test and a p-value of less than 0.2 was considered as variable selection criteria in this study. So the results showed that out of 121 eyes, 53 were emetropes, 41 were mild to moderate myopes, and 27 eyes were high myopes. In patients with emetropia and mild to moderate myopia, intraocular pressure at first post-op day increased slightly, but it was not statistically significant. Intraocular pressure at day 7, day 14 and post-op day 28 were significantly lower than the pre-op intraocular pressure. But in patients with high myopia, intraocular pressure at day 1 increased
and it continued to increase at post-op day 7, but it then decreased at follow-up day 14, and at day 28, the intraocular pressure was comparable to the intraocular pressure of emmetropes and moderate to mild myopes. So this is the table showing the correlation between a refractive error and change in the intraocular pressure at post-op day 1, 7, 14 and day 28. Here we can see that in emmetropes, intraocular pressure at day 1 was 16.3, which decreased at day 7 to 13.6 and further went on decreasing at day 14, 13.2, and at day 28 it was 12.9. Similarly, in mild myopes, we can see that intraocular pressure at first post-op day was 15.8, which decreased to 14.4, 13.9 and 13.2 in subsequent visits. But in high myopes, we can see that at post-op day 1, intraocular pressure was 15.2, which increased at day 7, which is 16.4. Then after further follow-up visits at day 14 and day 28, it then gradually decreased to 14.6 and 13.1. So a linear decrease of intraocular pressure was seen in emmetropes and mild to moderate myopes in first 14 days, and it remained persistent for upcoming days. But in patients with high myopia, there was not any significant decrease, but rather there was increase in intraocular pressure in first 2 follow-up visits, and in third follow-up visit it decreased, and after that there was an unstable decline. So in this study, phacoemulsification with IOL implantation resulted in 87% of the success for achieving goal of decreasing the IOP. An elevation of 3 to 4 millimeter of mercury was reported at immediate post-operative period at day 1, which is also mentioned in previous studies that there is an elevation initiated at 3 hours, which peaked after 24 hours. Elevation of intraocular pressure might be due to inflammation, post-op inflammation, or due to blockage of the trabecular meshwork, which can occur due to viscoelastic or left out cortical matter. The greater tendency of post-op IOP fluctuation in high myopia patients is similar to results which are seen in previous studies. So a little literature review was done. An article published in American Journal of Ophthalmology with the title Ocular Biometric Parameters Associated with Intraocular Pressure Reduction After Cataract Surgery concluded that in addition to preoperative intraocular pressure and lens thickness, parameters such as change in anterior chamber area and angle opening distance were significantly associated positively with reduced intraocular pressure after phacoemulsification. Another study carried out by Bonnell et al. With the title One Day Post-Operative Intraocular Pressure Spikes After Phacoemulsification Cataract Surgery in Patients Taking Tamsulosin. Tamsulosin is a drug which is given in patients having prostatic hyperplasia or inflammation, and it is responsible for causing intraoperative floppy iris syndrome. So, as well as it causes floppy iris syndrome, it can also cause an increase in the intraocular pressure first day post-operative after first day of cataract surgery. Another study was carried out which showed that a potentially IOP lowering stress response is induced in trabecular meshwork cells by ultrasound. The findings suggest that this response may be induced clinically during cataract removal by phacoemulsification and may be one mechanism responsible for reduction in IOP that often follows this procedure. So, analysis of this study inferred that the emmetropic, mild to moderate myopic and high myopic patients that underwent phacoemulsification showed depression in the intraocular pressure at the end of trial follow-up, depicting that cataract surgery decreases the IOP regardless of the refractive conditions. So, as we all residents are new to Journal Club, so I would like to tell few terminologies and study designs. The study designs are broadly classified into observational studies and experimental studies. Observational studies are those studies in which we observe responses of certain diseases or exposures, and we do not do any intervention or experiment. Observational study is further classified into cross-sectional study, cohort study,
and case control study. The cross-sectional study is the most basic form of the observational study in which only one group of people are involved and they are studied at one point in time and there is no follow-up visits and they are just studied at one point in time. Example of this cross-sectional study is frequency of any disease or any infection presenting in the outpatient department of a hospital at one point in time. Cohort study and cross-sectional and case control study both includes two group of individuals. In cohort study, it is basically a prospective study or looking forward study in which we take one group of individual and we compare it with the other group of individual. One group of individual is exposed to a particular risk factor and the other group is not exposed to a particular risk factor and we do follow up of those two groups and in this study, we basically investigate about the relationship of the exposure to the outcome of a disease. So it is basically a study which includes follow-up visits. Case control study is a retrospective study or a looking back study in which two group of individuals are involved. One group of individuals who have the disease are known as cases and the other group of individuals who do not have the disease or outcome are control. And we look back by taking history of those two groups to study if they are exposed to a particular risk factor which can tell us about the relationship of the risk factor and the outcome. The other group is experimental study design in which we do any experiment or intervention. It is classified into randomized control trial and quasi experimental design. In randomized control trial, they are usually done on newer modalities or newer therapies in which random selection of the individuals is done. Whereas in quasi experimental study, quasi experimental study tells us about the relationship between a dependent and an independent variable. Or we can say that it tells us about the causal impact of an intervention on a target group of population. So these are the few terminologies that we all should be familiar with. Mean, it is an average number in a data which is calculated by total of all values divided by the number of values. So in this way we can calculate the mean. Mode is value that appears most often in a data. Median is the middle number in a list of numbers which are arranged in either ascending or descending order. Range is the difference between the lowest value in the data to the highest value. Chi-square test, it checks the difference between two or more percentages of a categorical outcome, whereas the t-test checks the difference between the means of two groups. ANOVA test is similar to t-test, but it checks the differences between means of three or more groups. P-value is known, it is a probability value, and it tells us that whether a particular outcome which we got after the research occurred just by chance or it has any significance. So if the p-value is small, greater is the significance of the study. Thank you. An article, how you should read it, how you should write it, and how you should interpret these things. So this was the main idea. This was first presentation. So we'll just like to know how many of you have attended the research methodology workshop? One or two? ये research methodology workshops का purpose भी यही है to guide to make you aware of that. So practically अब हम यहाँ पे ये है कि once in a month we'll be discussing an article और उस article में whatever is been presented और किस तरीके से present किया उसके ऊपर discussion हो. And the senior PGRs for third year and onward, they will be presenting this topic. So what is the various components of an article? जब article writing होती है तो article में क्या क्या होता है? So first of all, there is a title. Then we have to write an abstract, which includes introduction, brief introduction, method, and results.
Then is the main part of the article, which comprises of introduction, methods and materials, data collection procedures, data analyzing procedures, then results, conclusion, and references. As well as there are constant form which should be attached at the end of the research article and Discussion is very important question. So सब very top पे क्या चीज आती है? The title. So title should be an impressive one. ठीक है, ऐसा हो कि लोग पढ़े, देखें कि इसमें कौन सी ऐसी स्टडी है या वट एवर हैज बीन डिस्कस्ड, तो एक इंटरेस्ट क्रिएट करे और वो जो भी आपने स्टडी की है, जो भी आपने उसको वो डिस्क्राइब कर पा रहे हो कि एट द एंड आप उसमें से जो हाइपोथेसिस आपने लिया है, आप उसमें से आप डिराइव क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट हैव यू मेड आउट ऑफ इट, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगली चीज होती है, नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट। अब ये दोनों चीजें जो हैं, टाइटल भी और एब्स्ट्रैक्ट भी, ये सब से आखिर में लिखा जाता है, दे आर ऑन द टॉप बट दे आर रिटन एट द एंड। जो एब्स्ट्रैक्ट है वो बेसिकली इट इज समरी, दूसरे लफ्जों में वो आपके जो काम किया है उसका इश्तहार है। बिकॉज जब भी आपका आर्टिकल या कहीं भी वो इंटरनेट पे देखा जाएगा तो सबसे पहले उसमें एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते, अगर एब्स्ट्रैक्ट इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ लगता है कि देन दे विल गो फर्दर और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट इफ इट इज नॉट इम्प्रेसिव तो वहीं का वहीं वो दे विल मूव फॉरवर्ड टू सम अदर। सो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट में, एब्स्ट्रैक्ट की क्या होती है, कितना होते हैं लफ्ज? एब्स्ट्रैक्ट एक छोटी सी एक इश्तहार है, तो उसमें आप कितने यूजुअली 150 to 200 वर्ड्स उसके अंदर होने चाहिए। और उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे आप? ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मेथड, और फाइनली रिजल्ट्स और फाइनली। अब इसके अलावा एक और चीज उसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ 3 या 4 लफ्ज होते हैं, ताकि जब कोई सर्च कर रहा हो तो उसमें आपके उस आर्टिकल का वो टाइटल या उसमें जो कीवर्ड्स हैं उसकी निस्बत से वो ओपन हो जाए कि इसमें ये डिस्कस किया गया, ये पॉइंट है मेन जो है, और दैट इज ओपन। तो उसको सर्च करने में कीवर्ड्स के साथ आसानी हो जाती है। तो कीवर्ड बटे 1 या 2 होने चाहिए, 2-3 होने चाहिए, लेकिन देयर शुड नॉट बी टू लॉन्ग, कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए कि सिंपल। उसके बाद अगली चीज क्या है? इंट्रोडक्शन। साइटेशन तो बीच में आएगा। इंट्रोडक्शन में क्या क्या है? इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि प्रीवियस स्टडीज में क्या हो गया, क्या हो चुका है, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको बेसिकली डिफाइन किया जाता है, और हमारा रैशनल क्या है, स्टडी रिसर्च गैप क्या है, हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, ये इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड देते हैं सारी इसकी, तो इसमें काफ़ी सारे साइटेशंस जो हैं वो आप दे सकते हैं। साइटेशन जो है वो उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें कोई साइटेशन नहीं होती, लेकिन इंट्रोडक्शन में और फर्दर जो है वो साइटेशंस होंगी। नेक्स्ट उसके बाद फिर हेडिंग आती है ऑब्जेक्टिव की, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स 1 और 2। सर उसके बाद फिर हाइपोथेसिस, अगर कोई है तो हाइपोथेसिस के इसमें क्या हाइपोथेसिस हम क्या गेन करना चाहते हैं, और वेदर नल हाइपोथेसिस है या हाइपोथेसिस प्रूव कर सकते हैं, पॉजिटिव हाइपोथेसिस है। सर उसके बाद आते हैं मेथड्स एंड मटेरियल्स। सो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, जो आप स्टडी में एक एज्यूम करते हैं कि इसका ये रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है, उस हाइपोथेसिस को आइदर यू प्रूव और यू डिसप्रूव, ठीक है, नलिफाई करते हैं। तो ये चीज़ इसमें आएगी आपकी जो हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली आप एज्यूम क्या कर रहे हैं, और उसका अल्टीमेटली आपकी स्टडी उसको फेवर कर रही है या उसको उसके अगेंस्ट जा रही है। तो उसके बाद मटेरियल एंड मेथड्स आते हैं, इसमें स्टडी डिजाइन, सेटिंग्स, ड्यूरेशन, सैंपल साइज, डेटा एनालाइजिंग टूल्स, इसमें सारा डाटा आपने जो है वो जो आपकी स्टडीज का आया है उसमें आपने लिखना है। और इसमें किस टेंस में लिखते हैं? पास्ट टेंस में प्रिपेयर करते हैं, तो उसको पास्ट टेंस में लिखते हैं।
व्हाट और उसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें रिजल्ट्स में आप ऐड करते हैं फिगर्स, ग्राफ, टेबल्स, वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के, और हर टेबल को आप लेबल करते हैं। ठीक है, लेबल करना बड़ा ज़रूरी है। फिगर जो होती हैं उसके लिए आप एब्रीविएशन यूज़ करते हैं FIG 1 2 3 4, लेकिन टेबल एज टेबल पूरा वो लिखा जाता है। और उसके बाद इनकी जो बार डायग्राम्स हैं वो आप बना सकते हैं, फिर आप इसका पाई चार्ट वो ऐड कर सकते हैं। सो जहाँ आपने डाटा देना है वेरिएबल, उसके लिए आप अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, दो वेरिएबल्स होते हैं ना, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस पे होता है और वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ज़रा इसमें ख्याल करना है। जब भी आप आर्टिकल कोई पढ़े तो क्रिटिकली इसको एनालाइज करें कि ये इस तरीके से हो रहा है, और डेफिनेटली पब्लिश तभी होता है जब वो एक सर्टेन क्राइटेरिया को मीट कर चुका होता है। तो वो जब आप बार बार पढ़ेंगे यू विल कम टू नो कि आपने किस तरीके से, और जितनी दफ़ा वही बात है, किसी भी चीज़ को जितनी बार रिहर्स करें, जितनी बार रिपीट करें, यू रिफाइन योरसेल्फ। ठीक, very good initiative, need of the hour। मेरी इस वक्त तकरीबन 50 पब्लिकेशन है, और पाकिस्तान जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में कोई पिछले तकरीबन 15 इश्यूज में वो मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। जब पिछले महीने, पिछले इशू में, उससे पिछले इशू में। सो ये सारी डिस्कशन का मतलब ये है कि आपने आर्टिकल पब्लिश करने, लिखने और पब्लिश करने शुरू करने, बेशक सिंपल सा हो, लेकिन स्विमिंग करने के लिए पूल में उतरना पड़ता है, साइकिल चलाने के लिए साइकिल के ऊपर बैठना पड़ता है। खाली उसको डिस्कस करके मामला नहीं हल होगा। जब तक आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, उस वक्त तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होएगा। अब पहली चीज़ ये है कि आपके ज़हन में कोई आइडिया आता है, पेशेंट देखते हैं कि भाई इस टॉपिक पे रिसर्च करनी चाहिए। पहले आप देखते हैं कि लोगों ने इसके बारे में क्या किया हुआ है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, अभी 3 आर्टिकल आपने दिखाए हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, एक 2003 का है, एक 2013 का, एक 2016 का। तो क्या इसके बाद इस टॉपिक पे कोई और आर्टिकल नहीं आया? आप जब पढ़ने लगते हैं तो पहले आप देखते हैं आर्टिकल कौन सा पढ़ना है आपने। पहले आप देखें एक ऐसा जर्नल जिसका इम्पैक्ट फैक्टर हो, ऐसा हाई क्वालिटी का जर्नल जिसके जो आर्टिकल्स हैं लोग कोट करें कि जी ये उस अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में आया है। पहले सिलेक्शन ऑफ जर्नल है, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल, लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ें। 10 साल पुराना आर्टिकल पढ़ने का मकसद कोई नहीं, 2023 का आर्टिकल पढ़ें, बहुत है 23 के आर्टिकल। उसमें जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो डिफरेंट डेटा बेसिस एनालाइज करते हैं। कौन कौन से हैं डेटा बेसिस? पबमेड, पबमेड एक है, गूगल स्कॉलर और स्कूपस, और ये कोई 10 के करीब आप कह रहे हैं डेटा बेसिस है, जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। आप पबमेड ही देख लें। अब पबमेड में जब आप सर्च करते हैं तो वो हर साल का वो बताता है कि जी 23 में ये आर्टिकल्स हैं, 22 में ये आर्टिकल्स हैं। तो आप जो लेटेस्ट 1-2 साल के हैं वो पढ़ें। उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा। फुल टेक्स्ट निकालने के लिए क्या तरीका है? एक आर्टिकल आपको अच्छा लगा है, अब आपने उसको डिटेल से पढ़ना है। कहाँ से? लिंक होता है। कितने पैसे लगते हैं? गुड। सो आप एक वो है नेट पे साई हब, ये अपने मोबाइल में डालें, जरा लिखें अभी SCI, गूगल सर्च में करें SCIHUB, साई हब। ये साइट खुली है। क्या लिखा हुआ है इसमें? आपको कोई आर्टिकल चाहिए
उसका DOI जो है नंबर या उसका जो टाइटल है वो इसमें डालें, वो आपको आर्टिकल दे देगा। अदरवाइज जो जर्नल्स हैं वो $50 मांगते हैं 24 घंटे के लिए अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ना है। ठीक है, तो ये मुफ्त की है। जो भी आपको लेटेस्ट आर्टिकल चाहिए इसको ट्राई करके देखें, और जो आपके इंटरेस्ट के 2-3 आर्टिकल होते हैं उसको फुल पढ़ें बजाय सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें। सो 2-3 चीजें तो ये हो गई। दूसरा, आपने सिंपल स्टडी से शुरू करना है। कोशिश करें कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा हो। अब सिंपल स्टडी क्या होती है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। मैं स्टडी करता हूं जी, हमारे जो ट्रेनीज हैं उनमें मेल का हाइट इतनी है, फीमेल की हाइट इतनी है, तो दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है? आप फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कितने लोग हमारे हॉस्पिटल के स्मोकर हैं और 5 साल या 10 साल के बाद कितने लोग इनमें से कार्सिनोमा लंग डेवलप करते हैं। सो ये एक स्टडी है। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है उसमें आप इंटरवेंशन करते हैं। आप कोई काम करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, जिसमें इंटरवेंशन नहीं करते। दूसरा ग्रुप वो होता है जिसमें आप कोई मेडिसिन देते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, कुछ करते हैं। अगर आप अपने पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 2 तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूट करने। एक तरीका ये है कि अच्छा यार ये 10 बंदे इस ग्रुप में चले जाओ, ये 10 बंदे इस ग्रुप में चले जाओ। दिस इज कॉल्ड नॉन रैंडमाइजेशन, और इस स्टडी को कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल। अगर हम वो निकालें, टॉस करें, अच्छा जी नंबर 1 को एक ग्रुप ए में डालना है या बी में डालना है, दिस इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन। ये ज्यादा प्रेफर्ड तरीका है, इससे जो बायस है वो खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड RCT, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एंड अ ट्रू एक्सपेरिमेंट, कि हर बंदे का आप टॉस करें कि जी इसको इस ग्रुप में डालना है। सो एवरी पार्टिसिपेंट स्टैंड्स एन इक्वल चांस ऑफ एंटरिंग ईदर ग्रुप। अगर रैंडमाइजेशन करेंगे तो सबसे अच्छी स्टडी होगी। बहरहाल वो आप सिंपल स्टडी से शुरू करें, कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट आपका कंटिन्यू हो रहा हो तो आपको एक्सपीरियंस हो। बाकी हम फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे। 2 मिनट रह गए।